रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। दिल की बात साहिल के साथ। जी हां दोस्तों, यह है शो का नाम और आप जानते हैं कि हर दिन कोई खास मेहमान होते हैं हमारे स्टूडियो में और करते हैं हम अपने दिल की बात। आज भी हमारे साथ सोपोर से, जी हां, वी हैव विद अस ए यंग डायनामिक एंड टैलेंटेड गर्ल, डॉटर ऑफ दिस सॉइल। बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है सोसाइटी के लिए। शी इज़ अ रिसर्चर, सोशल एक्टिविस्ट और अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे कर रही है काम। आइए मिलते हैं, जी हाँ, दरक्षा बट से। दरक्षा, वेलकम टू रेडियो चिनार। थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड यू एज अ सोशल एक्टिविस्ट, तो सोशल एक्टिविज्म में आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं और डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट दरक्षा, तो आपका डोमेन क्या है इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्टिविज्म एंड प्लस आपकी जो रिसर्च है उसके बारे में बताइए। Thank you, sir. I'm Darakshan. Plus, I'm working as a social activist. So, I'll tell you about myself. I've been the student of science for so long. So, then when I reached to a certain level, in masters, I went to Kashmir University and I got admission in humanities. So I got, by chance, that was a chance, I got selected in a women's studies program, general women's studies. That was a research center in Kashmir University. So that was a kind of turning point when I felt like whatever I'm studying or whatever it's actually connecting me. Absolutely. It's actually connecting me back to my family, back to the community, back to the people who are actually living there. Yeah. So I would not say science is not good, but the thing is, I felt that connectivity, and I also felt that this is what I'm made for. Then I switched to, I did my master's, then started the research project. I'm researching on so many different social issues. We are having our formal education. That's good. If we talk about these social issues, जो आप बात करना चाहती हैं, social issues में किन particular issues पे आप काम करती हैं? Yeah, right now there is अभी counseling पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं. Counseling of? Counseling of there is domestic violence. Okay. There's domestic violence here. So it's women-centric or it's gender-centric. It's gender-centric. It's gender-centric because we want to make people gender-sensitive. Absolutely. Why? Because we feel like there are repercussions. जब आप एक power dynamics को कहीं पर होता है, for example, we'll take women is here and men is here. ठीक है? So when things started, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस हुई, रिजर्वेशंस हुई. Now time will come when women will be here and men will be here, and they'll come up with these placards. अब हमें हक दे दो. Absolutely. हमारे साथ. So we have to think as the citizens, as responsible individuals, we have to get balance it. We have to get it at a certain level. Fine. So that is actually the case. Another thing is harassment is we find in our society there are so many, especially girls, when they get back to their home from schools, from institutions, from workplaces, harassment, if teasing, it's something that they can't discuss with their parents. They can't discuss with their family members. Right. और इससे हमने देखा है कि there are traumas cases होते हैं हमारे पास, या there is that breakdown, nervous breakdown है लोगों का. Who will address that? आप किसी फील्ड में या आप जिंदगी में करियर के हिसाब से कुछ भी करें, that is a secondary question. But the basic thing is human right. If girl is there or if any boy is there or man is there, so he is entitled to certain rights apart from the constitution or apart from being a citizen of some place. As that is a human right. Right. That's a human right. So that was something that triggered you. That we have triggered to me move exactly. on. That we have to work on this. So I'm working on all those kind of issues. See, you are working on all these kind of issues, from so long. You are organizing a meeting, seminars on ground level पे आप काम कर रहे हैं. If I'll ask you, पिछले बहुत सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल से. इनफैक्ट अगर हम कॉलेज लेवल से भी देखें, you have been very active and it's known. What's the change on the ground level? Are you, satisfied? I'm not saying 100%, but is it this gap increasing with each passing day? I think this is the very difficult question you have posed to me. But I would say, when you are in activism, don't expect results
within days. Okay, yes, it will take time. Yeah, social activism, it's something, you'll feel those differences after your decade. So but there are things, there are points where we feel very, where we see visible results. Absolutely. Like there are parents, there are some students, they were in trauma, some were in drugs, somewhere violence. For XYZ reasons. For whatever XYZ reasons. And this is society and family is very dynamic. Right. Okay, so It happens everywhere. People come from different backgrounds. Bilkul. They have different stories to tell. So that was the thing. जहाँ हमने बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी फैमिलीज में है, रिलेटिव्स में है, इवन दे स्पीक अप. कभी हमें लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, शायद मेरे साथ हुआ है. सो इफ देयर इज अनदर गर्ल और देयर इज अनदर टीचर, मैं उसके, मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है. बट वंस द अदर पर्सन स्टार्ट्स टू स्पीक अबाउट इट, तो वो ओपन अप हो जाते हैं. कहते नहीं, ये सच में प्रॉब्लम है. एंड दे फील लाइक द कनेक्टिविटी आती है. And they feel like नहीं, ये प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम है और इसका हल हो सकता है. So that is our job. We connect to people, we listen to their problems, and we do that lobbying. We see how we can address those problems. अगर हम इस पे बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है, दे डोंट हैव एनीवन जिनके साथ वो शेयर करें और अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करें. कभी होते हैं इंसान, इट्स वी आर इमोशनल पीपल, जज्बात होते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी लाइफ में शायद कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा ही नहीं होता है जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें. और अगर आप उस ग्राउंड लेवल तक जाके काम करते हो और लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज आपके साथ डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स का हल तलाश करते हैं और आप एक मीडियम बन जाते हैं उनकी लाइफ को एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए, देन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब. तो आपसे यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा दरक्षा, प्रेजेंटली अगर हम आज की डेट की बात करेंगे, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं राइट नाउ इन एप्पल टाउन सोपोर, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ की बात करें? Yeah, I'm working as a project coordinator in Human Welfare Voluntary Organization. And हमारा इस वक्त का प्रोजेक्ट जो चल रहा है that's Engage. Okay. ENGAGE. It's Engage All for Gender Equity. Okay. So there are basically two major themes or two major words. One is gender, another is equity. So gender में ऐसा था कि जब हम ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं या when we just go back to the societies, we connect to people, but we find that it's not, we can say this is the woman problem or this is the girl problem. It's everyone's problem. It's a problem overall in the society. Overall in the society. हम देखेंगे लड़कों के साथ प्रॉब्लम है. And they don't have anyone to listen. Men के साथ प्रॉब्लम है. So कहीं पर वुमेन को इतना अपलिफ्ट किया गया है, मेन वो कहाँ जाएगा, वो किसको? ग्रेट कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मेन एंड वुमेन जो राइट्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारी सोसाइटी में राइट्स है या रिलीजियस राइट्स है, व्हाटएवर, जब हम इनको एट पार एक ही मतलब प्लेटफॉर्म पे बैलेंस करेंगे, एंड दैट वुड बी अ वंडरफुल डे जब हमारी सोसाइटी भी बैलेंस होगी एंड देयर विल बी नो इनजस्टिस टू एनी जेंडर. और इसी पे आप काम कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ा इलॉबरेट कीजिए कि कौन से एरियाज आप टारगेट करने वाले हैं इन कमिंग डेज एंड व्हाट्स योर प्लान? Okay, so if I come to another part of this, that was equity concept. तो जब हमने equality की बात की, so if I am an entrepreneur, I have some business firm, तो मैंने वहाँ पर jobs provide कर ली, it's all right. तो मैंने posts निकाले, so I give an advertisement, men and women, girls, boys, they are equally वो apply करेंगे. But is it like कि as a person मैंने ये नहीं सोचना है कि equality है, it's equity because you have to consider कल को यही लड़की she'll get married off. बिल्कुल. Child bearing is her biological role. You cannot deny her. लड़का एक 10 किलो हम नहीं बोलेंगे, 50 किलो का सिलेंडर भी उठाएगा, 100 किलो भी उठाएगा, तो he can lift certain that is something but natural. By nature. इसको हम कुछ कर लड़की नहीं कर सकती है. So equality is very misleading concept. So when it's equity, you are considering her biology, you are considering her difference. She is different. But उसमें एक ही चीज आती है, like I mentioned earlier, we have to balance it. Right. Girl or women also have to think that this is my biology, so I don't have to exploit. When I get positive discrimination or reservations somewhere, मुझे अपना जिम्मेदारी निभानी है.
बिल्कुल, अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे जो ओवरऑल जो लाइफ में बैलेंस होती है, वी हैव टू मेंटेन इट इन एनी फील्ड, जिस भी प्रोफेशन के साथ हम जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं तभी हमारी जो ज़िंदगी है वो आगे चलती है, वो ज़िंदगी की गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। दरअसल बहुत से आपको भी देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, रेडियो चिनार के हैंडल्स पे, और बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और जो इस जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, वो ये समझते हैं ये होना चाहिए। यू आर इन टू दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, यू आर इन टू सोशल एक्टिविज्म, और पर्टिकुलरली आपका यही एक फील्ड है, डोमेन है। अगर आपकी मैसेज हम लेना चाहेंगे उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो ये चाहते हैं कि ये बैलेंस हो जाए, एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर देम? So my message will be just for you have to introspect on two things. One is prejudice, another is a bias. ये आपका जो stereotype है। So, अगर आप यंग जनरेशन है या हमारे पेरेंट्स भी अगर देखेंगे, पर्सन हु इज अ लाइव पर्सन, बिल्कुल, हु इज अ ह्यूमन बीइंग, उसने एटलीस्ट अपनी जगह किसी चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि what is right, what's wrong. We don't have to go with the old stereotypes and old negative derogatory stereotypes. At times we need change in the society. We need changes in the society, and every person has to be, he has to make himself ready to accept those changes. बिल्कुल। आज ड्राइव सिर्फ आप मुझे बताएं, if you are a brother or whatever role you are in, so you are expecting your sister to be in a university or be in a college, या उन्हें ट्रैवल तो करना है ना, तो बस में ट्रैवल करेगी वो, that is fine. So if she is driving or riding, is that a problem? तो आप नजरिया चेंज करें, that is safe for her, तो वो तो उसकी सेफ्टी के लिए। तो आप क्यों ओल्ड स्टीरियोटाइप क्यों लेकर जाते नहीं, बाइक को राइड सिर्फ या स्कूटी, that's a good thing. Gradually we can adapt, things are changing. Yes. हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव Change चेंज is आ the रही है, law of nature. it's law of nature, absolutely. इस चीज को हर कोई एनालाइज करे, नजरिया बदले, मुझे लगता है हमारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, एंड वी होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स, चाहे यंगस्टर्स हो या किसी भी एज ग्रुप के हो, जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं, एवरी टाइम वी ट्राई टू मोटिवेट एंड इंस्पायर यू विद पॉजिटिव मैसेज एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अवर गेस्ट। आज भी दरक्षा यहाँ पे आई, जाते जाते इनसे एक सवाल पूछूंगा, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रेडियो चिनार की तरफ से आपको हम थैंक यू कहते हैं। आप यहाँ तो आई, लेकिन जो आप काम करती है ना, इट्स नीड ऑफ एन आवर, बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है आप। आवर बेस्ट विशेस और विथ यू, और कभी भी आपको रेडियो चिनार की तरफ से कोई भी प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ जो आप इवेंट्स कैरी आउट करते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स। Thank you so much, sir. We need your support also. We need support from the citizens also, from boys, from girls, from parents, from grandparents even. Absolutely, and I promise you, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि जेंडर इक्वालिटी पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। जाते जाते आप बताइए, आज आप पहली बार रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए, हाउ इज़ द फीलिंग ओवरऑल बीइंग हियर विद अस ऑन दिस हॉट सीट? I mean, it always feels like when you go and connect with the people and you express. One thing I would like to mention, I'm not that much active on social media because I'm very much connected to the actual things. World. बिल्कुल, actual world. So people can directly mail or they can directly call with the problems. So I don't have that much time, so I can spend on social media. So it's like these are the platforms where you express yourself, where you express your work, or where you want to where you give that message back to the society what you are actually doing, and what you are actually doing for them also. That's for them, that's for us, that's for the future generations to come, just to make the places safe spaces for them, safe spaces for our boys, for our girls, for everyone. will be inshallah as well. इंशाल्लाह। तो दोस्तों बस इतना ही हम कहेंगे कि रेडियो चिनार के साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही स्पेशल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हमारे स्टूडियो में आती रहेंगी और आपकी मुलाकात उनसे हम करवाते रहेंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो चिनार। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स। रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।